Hello everyone. Today we will continue the topic LEXIS of the TKT Cambridge Test Program for the teachers. And in this topic previously हमने जो बात की थी वो part 1 में की थी, जिसमें हमने कवर किया था कि भाई LEXIS में होता क्या है, vocabulary actually words और group of words के साथ ये डील करता है। फिर हमने बात की थी इसमें जो होता है figurative meaning and denotative meaning, फिर affixation की बात की थी, compound nouns की बात की थी, chunks की बात की थी, जिसमें हमने बात डिस्कस की था कैलिब्रेशन को, फिक्स एक्सप्रेशन को और idioms को। बाद में आके हमने synonym, antonyms और lexical set, वर्ड फैमिली के बाद में बात की थी। तो यहां तक था हमारा प्रीवियसली डिस्कस टॉपिक। अभी आज हम शुरू करेंगे फॉल्स फ्रेंड से। फॉल्स फ्रेंड मीन, इसके मानी क्या होते हैं और किन चीजों के लिए यूज होता है, किस किस्म के अल्फाज, इसलिए कि हमारा जो टॉपिक है ये वर्ड्स के साथ डील कर रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि भाई फॉल्स फ्रेंड जो है वो किसको कहते हैं। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूं आपसे स्क्रीन, उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा टाइम ये लेगा। सही, तो ये है हमारा टॉपिक आज का। पिछली दफा हमने जो डिस्कस किया था वो हमने पेज नंबर 16 और 17, लेक्सिस यूनिट 2। तो आज हम ये किस पेज पे चला गया, आज की जो कंटिन्यूटी है वो है फॉल्स फ्रेंड की। तो अभी इसमें कहते हैं कि फॉल्स फ्रेंड्स यहां से शुरू होगा। False friend, homophones, homonyms, and variety of English are other ways in which words can relate to one another. अभी इससे जो पहले हमने बात की थी वो बात ये थी कि वर्ड्स के आपस में रिलेशनशिप होते हैं, जिस तरह के हम ह्यूमंस के रिलेशनशिप होते हैं, वर्ड्स के भी होते हैं। और उसके बारे में हमने बात की थी वर्ड फैमिली जिसको कहते हैं, और एक वर्ड फैमिली के साथ सिमिलर किस्म का आता है जिसको हम कहते हैं लेक्सिकल सेट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसकी डिफरेंशिएशन हमने बहुत अच्छे तरीके से की थी, आपको समझ आ गई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन इसके बारे में है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बात करते हैं फॉल्स फ्रेंड्स की, होमोफोन्स की, होमोनिम्स की, वैरायटी ऑफ इंग्लिश आर अदर वेज इन विच वर्ड्स कैन बी रिलेटेड टू वन अनदर। False friends are very important in language teaching and learning. They are words which have the same or similar form in two languages but a different meaning. अभी जो false friend होता है वो इस किस्म का एक वर्ड जो वर्ड तो सेम है लेकिन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसके मानी जो है, इसके मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। सेम वर्ड हैविंग टू डिफरेंट मीनिंग्स इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। इट डज नॉट मीन, ओके, embrasado for example means
Pregnant in Spanish. It does not mean embarrassed, though it looks as it does to an English speaker. Homophones and homonyms are important. अच्छा, अभी बात करते हैं false friends की. False friends आपको just general knowledge के लिए is fine, but you will not be asked in the test about the false friend. इसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. वजह यह है कि जब ये जो false friends हैं मोस्टली इंग्लिश और इसके रिलेटेड जो लैंग्वेजेस हैं, लैटिन हो गई और या दूसरी क्या है जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, तो इनके आपस में वर्ड्स जो है ना यूज होते हैं. इंग्लिश जिस तरह का आपको पता है, इंग्लिश में आपको वर्ड्स मिलेंगे हर लैंग्वेज से इन्होंने वर्ड्स लिए हुए हैं, तो उनकी कोई कॉम्बिनेशन जो रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स है वो हमारे जुबानों से नहीं बनता. इसी वजह से वो इस किस्म का क्वेश्चन पेपर में नहीं देते, जिसमें ये TKT का जो पेपर होता है ये तो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड होता है, तो वो कॉमन किस्म के क्वेश्चन देते हैं विच इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड. सो इसको आप जस्ट जहन में तो रख लें, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा और ना अभी तक आया है. It does not mean embarrass. Okay. Further is homophones. Homophones and homonyms are important too in language learning. Homophone क्या है? Homophone are words with the same pronunciation but a different meaning or spelling. For example, no, K-N-O-W, no, and N-O, no. Same pronunciation but different meaning and spelling. Whether and whether, their. Homonyms are words with the same spelling and pronunciation as another word. अभी homonyms क्या है? इनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, but different meaning. Pronunciation and different meaning. They sat on the river bank. B-A-N-K, bank. He put all his savings into the bank. So अभी both दोनों बैंक हैं लेकिन meaning इसके different है. Words can also relate to one another through being example of different varieties of English. For example, different kinds of English spoken around the world, Indian, Australian, US, South African, British. These varieties sometimes affect LEXIS, as the same things can be called by different names in different varieties. For example, flat, British English, apartment, US English, unit, Australian English, or cookie, US English, and biscuit, British English. The table below show example of some of the form and meanings relationship of two words. तो ये टॉपिक यहाँ पे इसका खत्म होता है, जिसमें हम बात करते हैं वर्ड्स की रिलेशनशिप्स, अल्फाज की रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ. दूसरी बात, अफिक्सेशन के थ्रू कैसे हम अल्फाज के डिफरेंट मीनिंग्स बनाते हैं. फैमिली, वर्ड फैमिली जो होती है उसमें कैसे अल्फाज अफिक्सेशन के थ्रू उसको एक्सटेंशन मिलती है और उसके मीनिंग चेंज होते हैं. बाद में लेक्सिकल सेट हो गया, जिसमें हम देखते हैं कि टॉपिक जो है ना सेम टॉपिक से वो रिलेट करते हैं अल्फाज, लेकिन उनके एक दूसरे के साथ जिस तरह कोई मुशाबहत नहीं होती, कोई रिसेम्बलेंस नहीं होती उसकी. जैसे वेजिटेबल हो गए तो सारे वेजिटेबल जो है एक दूसरे से शक्ल में और उनकी जो शेप है वो और उनके जो नाम है वो टोटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन टॉपिक एरिया इनका सेम है. They belong to all. We call them vegetables. All right. Likewise for the fruit, to the fruits, and likewise to the furniture and different other things also. Collocation, fixed expression in idioms की बात की, वो उसके आप जाएं डिटेल में, अपने नोट्स बनाएं उसके, उनके जनाब एग्जाम्पल लिखें. ग्लॉसरी है इसकी, वहां पे भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, या आप इसको गूगल कर सकते हैं और इनकी लिस्ट जो है ना डाउनलोड करके. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से
वर्ड्स कैलोकेशंस हैं, फिक्स एक्सप्रेशन है और इडियम्स है। डिफरेंशिएशन हमने कर ली थी प्रीवियस लेसन को, आप चेक करें लेक्सिस पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा इसके बारे में डिटेल। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछें, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। राइट, लेक्सिकल फीचर, clear, adjective, paper, noun, denotation, easy to understand, not covered or blocked, having no doubt. Number 1, material used to write or wrap things in. Number 2, a newspaper. Number 3, a document containing information. Synonym, simple of denotation 1, certain of denotation 3, none. ये सारी जो हमने डिस्कस की हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, लेक्सिकल सेट, इन सब के इन्होंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो इससे आप गो थ्रू हो जाएं और ज़हन में बिठा लें। तो वो अभी हम बात करेंगे जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है उसके बाद आपको फॉलो अप एक्टिविटीज जो है वो करनी चाहिए, जिसमें आपको मिलती है क्या, प्रैक्टिस किस चीज की, एग्जामिनेशन की। और ये जो सेकंड टॉपिक आता है इसमें ऑलवेज की कॉन्सेप्ट एंड द लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम, ये आपको आइडिया देता है कि भाई इस टॉपिक को आप एज अ टीचर क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टिप्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, मुख्तलिफ ये आपको इन्होंने पॉइंट्स दिए होते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने भी पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अपने क्लासरूम में अप्लाई करें। आपने देखना होगा कि आपकी क्लासरूम के हिसाब से, जिस तरह के आपके स्टूडेंट्स का लेवल है, कौन से पॉइंट्स सूटेबल है। तो जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आप फॉलो करें, लेकिन आप अब इनकी suitability depends on your way of teaching, your class level, the student's age. It depends on all that. So you can select what is suitable for you. The second thing which you get out of this area, that you have to note it down what type of activities and tasks are given here to practice for that particular topic, which is topic of the unit which you are discussing. That, like here is the LEXIS. So now we will see how we teach LEXIS different ways, what are the activities or tasks we do, what the teacher is supposed to do in their classes. So इस चीज की आपको यहाँ से काफी knowledge information मिल जाएगी। अभी देखें, first, fully knowing a word involves understanding its form and meaning. For example, what part of speech it is, how it is pronounced and spelled, and the meaning it can have. This cannot take place at first time a learner meets a new word. It takes learners a long time to fully understand and use a word. At first, they will probably just learn its most frequent denotative meaning, spelling and pronunciation. अभी जब आप इसका क्या है, आसान लफ्जों में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जब वोकैबुलरी पढ़ानी हो, इनिशियल स्टेज पे जरूरी नहीं है कि वो आप अपने स्टूडेंट्स को एक वर्ड के बारे में सब कुछ बता दें या वो सब कुछ इसके बारे में समझ लें या जान लें। ये फर्स्ट स्टेज पे उनको क्या चाहिए, डिनोटेटिव मीनिंग, ओरिजिनल मीनिंग किसी वर्ड के हैं तो उनको उसका पता होना चाहिए। बाद में ग्रेजुअली जैसे ही वो लेवल उनका हाई होता जाएगा, उनका लेवल जो है ना इम्प्रूव होगा और वो एडवांसमेंट करेंगे लैंग्वेज लर्निंग में, तो ऑटोमेटिकली उनकी मालूमात में इजाफा होगा इन वर्ड्स के और इनके मीनिंग्स के बारे में। तो इनिशियल टाइम से आप क्या करें, उनको सिर्फ बेसिक बताएं, उनको एडवांस यूज का या सेकंड थर्ड यूज ना बताएं, इसलिए कि एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, तो उसको जो ओरिजिनल मीनिंग है
at the initial stage, they need to know only about that. Later on, when they improve in the language, they can further learn the figurative meaning and the different use according to the situation. Second point, learners need to meet the same words again and again as they advance in their language learning. In this way, their memory of them will be consolidated and they will get to know more about the word. For example, other meanings, collocations, the lexical set they are part of. They can meet words again in text and in vocabulary extension activities. For example, activities that give more practice, such as brainstorming, labeling, categorizing, making lexical set. अभी जब स्टूडेंट एक वर्ड उन्होंने सीख लिया है, जैसे ही वो फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, मोर लर्निंग उनकी जनाब वो होगी, उसमें ये होगा कि वो वर्ड जब बार बार उनके सामने आता है तो वो इसको जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड मींस इनको अच्छी तरह समझ आ जाता है दोबारा इसकी प्रैक्टिस करने से, दोबारा इस वर्ड को किसी दूसरे पैराग्राफ में और टेक्स्ट में समझने के बाद। तो जब इसको ओवर एंड ओवर अगेन इनके सामने एक वर्ड आता है तो उससे उनकी कंसोलिडेशन हो जाती है, रीइंफोर्समेंट। जिस तरह के कंसोलिडेट को समझने के लिए आप ये करें, ग्लॉसरी में आपको इसकी मीनिंग मिल जाएंगी। हम जब एक चीज पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं, कुछ एक्टिविटीज उनको देते हैं। वो एक्सरसाइजेस एंड एक्टिविटीज क्यों देते हैं कि उनमें जो लेसन है उनके जहन में वो कंसोलिडेट हो जाए, पक्का हो जाए, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी उर्दू में पक्का हो जाए। तो उनके जहन में उसको पक्का करने के लिए हम कंसोलिडेशन, रीइंफोर्समेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इस तरीके से जब वो बार बार लफ्ज को देखेंगे तो उसके वो दूसरे मायने भी समझ जाएंगे, उसके कैलोकेशन या फिक्स एक्सप्रेशन इसके बारे में जहां पे यूज हुआ है या कॉम्बिनेशन विद अदर वर्ड्स इफ इट इज यूज हुआ है उसमें कुछ समझ आ जाएंगे। फिर हम इसमें करते हैं एक्सटेंडेड एक्टिविटीज। एक्सटेंडेड एक्टिविटीज वो होती हैं जो फर्दर प्रैक्टिस आप देते हैं स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक के बारे में ताकि उनको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो मुख्तलिफ किस्म के हम उसमें उनको प्रैक्टिसेस कराते हैं। तो उसको उनमें ये जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी आप लेबलिंग, कैटेगराइजिंग, मेकिंग लेक्सिकल सेट, ये जो चीजें हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेबलिंग, कैटेगराइजिंग, मेकिंग लेक्सिकल सेट्स, अभी इनको आप ग्लॉसरी में जाके देखें इनके मायने क्या है। मैं अभी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि आपको इसके इजीली ग्लॉसरी में मिल जाएंगे। तो आपने इसको फॉलो अप करना है और खुद को समझना है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग यू हैव टू गो थ्रू दैट। तो मैं इस चीजों की मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा इसलिए कि ये जस्ट मीनिंग और एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी, जो आप इजीली गूगल से भी देख सकते हैं। प्लस ग्लॉसरी जो TKT की अवेलेबल है ऑनलाइन, वो डाउनलोड कर लें और कोई किसी को नहीं मिल रही तो मैं उनको फिर भेज दूंगा। तो उसमें आप ये सारी जो है ना इनकी एग्जाम्पल प्लस इसकी जो क्या है प्रैक्टिसेस हो गई, ओके, वो सब कुछ आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो ये हो गया कि भाई वो फर्दर अच्छी तरह समझ जाएंगे जब एक लफ्ज बार बार उनके सामने आएगा और हम उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज कराएंगे। और एक्टिविटीज में ये वाली एक्टिविटीज ब्रेनस्टॉर्मिंग की, लेबलिंग की, कैटेगराइजिंग की, मेकिंग लेक्सिकल सेट्स, इस किस्म की एक्टिविटीज हम कराते हैं ताकि उनको वोकैबुलरी की अच्छी समझ आ जाए। Further, whether we are learning our first or our second language, we often recognize a word before we can use it. And we can often recognize the meaning of many more words than we can use. The words we recognize are called our receptive vocabulary. The words we can use are called our productive vocabulary. A teacher usually teaches learners key, important words and exposes them to many more. The learners pick these words up, initially only recognizing their meaning, then eventually using them productively. अभी जब हम
अल्फाज सीखते हैं, वर्ड्स सुनते हैं, उनको सीखते हैं, तो उनके हम जो वर्ड है उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे उसको कहा जाता है वो भी हमको समझ आती है, सम की कुछ के हमको मीनिंग समझ आती है। तो उसमें ये होता है कि वर्ड सब दो तरीके से हमारे पास हमारे जहन में आ जाते हैं। एक है कि भाई रिसेप्टिव मीन जो हम सुन लेते हैं और अपने पास हमारे पास होते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्टिव, जब उसी लफ्ज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसेप्टिव मीन में भी हम सुन लें लेकिन वी विल नॉट बी एबल टू, हम उसके मानी भी समझ लें लेकिन वी विल नॉट बी एबल टू यूज इट। सो वो वर्ड प्रोडक्टिव नहीं बनता जब तक हम इसको यूज नहीं करते। तो प्रोडक्टिव तब बनता है जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। रिसेप्टिव, प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव मीन रिसेप्शन, कमिंग टू अस। प्रोडक्टिव मीन गोइंग फ्रॉम अस, राइट। सो next one is, as words can get part of their meaning from context. अल्फाज कॉन्टेक्स्ट से, और ये हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं कि भाई एक लफ्ज की जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ईच एंड एवरी वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग। सो समटाइम व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि हम एक वर्ड के बारे में जानने के लिए उसके सराउंडिंग को पढ़ते हैं, उससे पहले कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद और फिर हम गैस करते हैं व्हाट वुड बी द प्रोबेबल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। सो यही बात वो कर रहे हैं यहाँ पे। एज वर्ड कैन गेट पार्ट ऑफ देयर मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट helps to show the meaning of the words, it is useful to teach them in context rather than in isolation. For example, to text, stories or description of event and tell the students about. जब भी आप वोकैबुलरी पढ़ाना चाहें स्टूडेंट्स को, तो जिस तरह के भाई आइसोलेटेड वर्ड हो गए, एप्पल, बीफ, बैट, जिस तरह पढ़ाया जाता है उसमें, तो जिस प्राइमरी में कहते हैं ये अच्छा तरीका नहीं है। उनको कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में वर्ड्स पढ़ाएं कि वो प्रैक्टिकली देखें कि भाई इसको यूज कैसे किया जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से वो वर्ड उसके जहन में रहेंगे। और सिंगल आइसोलेटेड वर्ड जब आप पढ़ाएंगे तो वो ज्यादातर उसको वो मेमोराइज करेंगे, किसी की मेमोरी अच्छी होगी, किसी की नहीं, इस तरह से वो भूल जाते हैं। लेकिन कंटेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप प्रैक्टिकल यूज में एक लफ्ज को सीखते हैं तो वो कम ही वो भूलते हैं, इसलिए कि सिचुएशन उनको याद रहता है, तो फिर वर्ड भी उस हिसाब से याद रह जाता है। तो ये एडवाइस करते हैं कि भाई आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो उनको बेहतर समझ आएगी वोकैबुलरी की। We can use the relationship in meaning between words, synonym, lexical set and word families and the ways in which they can be built, prefixes, suffixes, compounds, to make activities to help our students extend their knowledge of words, making opposites, building words through affixation, brainstorming, lexical sets and word family. Now just ये सारी टॉपिक की चीजें जो हमने डिस्कस कर ली हैं मेन टॉपिक में, इसमें भी दो, जिस तरह के हम वर्ड्स बनाते हैं तो बनाते हम अफिक्सेशन से हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, जिससे हम न्यू वोकैबुलरी आ जाती है। और साथ में जो होती है प्रैक्टिकल यूज जब होता है तो उसमें सिनोनिम, लेक्सिकल सेट एंड वर्ड फैमिली ये यूज के लिहाज से आ जाते हैं। तो दो किस्म के हैं वर्ड के बारे में, एक है वर्ड बनते कैसे हैं, दूसरे यूज कैसे होते हैं। तो लेक्सिकल सेट में सिनोनिम, एंटोनिम, इसमें और वर्ड फैमिली में वो यूज, प्रैक्टिकल यूज के मुतालिक है। द फर्स्ट पेज लेक्सिकल पे जो हमने डिस्कस किया है उसमें आता है कि भाई व्हाट इज इट कॉल्ड, मीनिंग हो गई, फिगुरेटिव मीनिंग हो गई, ओरिजिनल मीनिंग हो गई, डिनोटेटिव मीनिंग हो गई, साथ में अफिक्सेशन हो गया, कंपाउंड नाउन्स हो गया, कैलोकेशंस हो गए और फिक्स एक्सप्रेशन हो गए, इडियम्स। ये इनकी मीनिंग कैसे हम हासिल करते हैं, हाउ वी गेट देयर मीनिंग, वो इसमें हम करते हैं। प्रैक्टिकल यूज on the next page, which is given synonym, antonyms, lexical set, word family, all that comes under the use of the vocabulary. So next जो है ना, when we teach learners new words, we can check if these words have any false friend in their language, or these words are homophones or homonyms or other, they know.
they can point this out in the learners and to help save them from the misunderstanding. False friend तो anyhow हमने डिस्कस किया है कि false friends वो अल्फाज होते हैं, वो लफ्ज होता है, not अल्फाज, जो एक लफ्ज two different languages में यूज हुआ हो और in both two languages इसके मीनिंग जो है ना डिफरेंट होते हैं. लफ्ज सेम है but in one language it has one meaning and another language it has another meaning. जिस तरह का काफी सारे हैं, आप देख लें तो वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में यूज होते हैं और उनके मीनिंग जो है ना वो डिफरेंट होने चाहिए. Same word, but in one language it is called one with one meaning, and in another language it is called the same word with a different meaning than the previous one. So इसको कहते हैं false friend. So आप false friend anyhow may not be that much effective way of teaching in the South Asian countries' languages, but with the English. But the most one which is the one which is most useful will be homophones, homonyms, antonyms, okay, and which is in that way when we are teaching the words, the students take interest also, and it remains on their mind. So that's the best way to teach them and clear up their misunderstanding regarding the words. Some words like, you know, it is pronounced different way, but spelling is same. All right, likewise a lot others. Last point, I don't know whether it's the last point or we have another point on the next page, is at beginner level and with young learners, we often teach general words for categories first, then gradually introduce different items from that category. For example, we may teach clothes before teaching jeans, shirt, t-shirt, etc. अभी जब हम बात करते हैं बिगिनर्स की, यंग लर्नर्स की, जो प्री स्कूल में हो गए, प्राइमरी में हो गए, वहां पे जब हम उनसे बात करते हैं वर्ड्स के बारे में, उनको पढ़ाते हैं वर्ड्स के बारे में, तो हम उनकी जो है ना इनिशियल बेसिक से शुरू करते हैं और उसमें ये है कि आपको जो बेसिक कैटेगरी है उसमें आप बिल्कुल बेसिक पे रहें, उनको एक्सटेंडेड वोकैबुलरी ना पढ़ाएं. ठीक है. अभी जब जिस तरह की ये एग्जाम्पल आपको दिए हुए, फॉर एग्जाम्पल वी मे टीच क्लॉथ्स. अभी क्लॉथ्स हम उनको पढ़ाते हैं बिफोर टीचिंग जीन्स, शर्ट, टी शर्ट्स एंड ऑल. ओके भाई, इसको हम क्लॉथ बोलते हैं. ओके, फिर जब वो जो चीजें उन्होंने पहनी हुई है हम उसकी एग्जाम्पल दें तो उनको बेहतर समझ आएगी. शॉर्ट है और शर्ट है और टी शर्ट है समथिंग. सो पहले उनको बताएं कि ये कैटेगरी आती है क्लॉथ्स में. वेजिटेबल, अभी हम उनको बताते हैं डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट थिंग्स इन द वेजिटेबल, बट उनको ये पता होना चाहिए कि इनको फर्स्ट वेजिटेबल क्या है. ये वेजिटेबल है, ये भी वेजिटेबल है, इसे दिखाएं. तो वेजिटेबल का वर्ड फर्स्ट उनके ज़हन में होना चाहिए, फर्दर वो इनकी कैटेगरी सीखने जाएंगे. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा हम कर जाते हैं कि हम उनको बेसिक कैटेगरी नहीं सिखाते, हम उनको स्ट्रेट अवे सिखाते हैं नाम. तो ये कह रहे हैं कि उनको पहले सब कैटेगरी सिखाने से पहले उनको बेसिक जो उनका मेन कैटेगरी है वो उनको सीखना चाहिए. अच्छा, 2 पॉइंट्स यहां पे भी हैं, देखते हैं इसमें क्या मेंशन है. राइट. So यहाँ पे आता है a lot of language often occur in chunks. Chunks की हमने बात की है पहले फर्स्ट पेज पे. Collocation, fixed expression. Experts think that the children learn their first language, learn the chunks as a whole rather than in parts. This helps them to remember them better and recall them more quickly. As teacher, we can highlight, draw learners' attention, chunks of language for learners. So chunks जो होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, chunks हमें जब हम अपनी मादरी जुबान मदर लैंग्वेज हम सीखते हैं तो हम चंक्स में सीखते हैं. हम ग्रामर नहीं पढ़ते उसमें, स्ट्रेट अवे हम चंक्स में सेंटेंसेस होती हैं, फ्रेजेस होती हैं, वर्ड्स होती हैं जो बच्चा पिक करता है फिर प्रैक्टिस करता है उसकी. तो इस तरीके से ये कहते हैं कि जब स्कूल में भी आप पढ़ा रहे हो तो उनको चंक्स के बारे में पढ़ाना चाहिए जब आप उनको
बच्चों को, और उनको बताना चाहिए कि ये कितने चंक्स इसमें यूज हो रहे हैं, किस तरीके से। तो वो एक तरीका है बच्चों को, जिस तरह के हम वो नॉर्मल जुबान अपनी मदर लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो इसी तरीके से वो स्कूल में भी सीख सकते हैं। It is useful for learners to keep vocabulary records in which they record the meaning and the new words. They are part of speech example used in collocation, pronunciation, and synonyms. Students can return and add information about individual words as they learn more about them. तो वो ये तो यूजुअली हम करते हैं कि भाई वोकैबुलरी के लिए हम अलग से एक नोटबुक बना के स्टूडेंट रखते हैं, जिसमें वो टॉपिक वाइज या पेज वाइज उन्होंने वर्ड्स के मीनिंग लिखे होते हैं, उसमें साथ में एग्जाम्पल देके यूज किया जाता है। तो वो एक बेहतर तरीका है, इसलिए कि उनको कम से कम उस चीज का पता चल जाता है कि भाई इसमें हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में कितने वर्ड्स हैं, कितनी न्यू वोकैबुलरी उन्होंने सीखी है। और अगर टॉपिक वाइज वो इस तरह रिकॉर्ड बना के, नोट्स बना के जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो उनकी वोकैबुलरी में इजाफा होता है। तो it's a good thing to have a notebook for noting down the vocabulary record, and time to time the teacher can follow up whether they remember it. अच्छा, अभी फॉलो अप एक्टिविटीज में आपसे कहता हूं कि भाई आप इसको करें, ठीक है। और ये फॉलो अप एक्टिविटीज जो है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन देगी। और इसके आप जो आंसर्स हैं वो पेज नंबर 238 पे हैं, वो चेक कर लें। फॉलो अप एक्टिविटीज के बाद लास्ट में जो हर टॉपिक के आता है वो है टीकेटी प्रैक्टिस टास्क। सो टीकेटी प्रैक्टिस टास्क भी आप मस्ट करें, इसलिए कि दिस इज द वे द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द टेस्ट पेपर। और इसके भी आपको आंसर मिल जाते हैं 245 पेज पे। और देखें, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं इस टॉपिक में। कंपाउंड, वर्ड फैमिली, लेक्सिकल सेट, मल्टी वर्ड वर्ब, सिनोनिम, वर्ड विद सफिक्स, वर्ड विद प्रीफिक्स, ये सारी हमने डिस्कस की हैं। और फिर अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वो क्वेश्चन करते हैं, और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हाउ मच यू रिमेंबर फॉर दैट। सो दैट्स इट फॉर द today's topic, and it is completed lexical part 2 and part 1 previously we have covered. तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन कर सकता हूं। So thank you very much and God bless you all. See you next time.